आज का दिन हमारे आकाशवाणी के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज का दिन पूरे आकाशवाणी परिवार के लिए बहुत ही भावुक पलों से सराबोर है। आज हमारे परिवार के एक सदस्य बहुत दिनों के बाद घर वापस आए हैं। हम सब यहाँ पल के बिछाए पूरे दिल से उनका स्वागत करते हैं। कौन है वो और क्या संबंध है उनका हमारे आकाशवाणी परिवार से, उनका परिचय आपसे करवाएंगे उन्हीं के इस गीत के बाद। आखिर वो पल आ ही गया जब हम बड़े ही गर्व और आदर के साथ आपसे उनका परिचय करवाते हैं। He is none other than the extremely versatile, humble, multifaceted Tamil actor, politician, filmmaker and singer Shri R. Sarathkumar. வணக்கம் சரத்குமார் ஐயா அவர்களே, ஆகாஷ்வாணி குடும்பத்தார் உங்களை வரவேற்கிறோம். Welcome to the studio of All India Radio, sir. Thank and you. on behalf of the entire family of All India Radio, I welcome you here to the studios. Thank you so much. So this was a wonderful song that we just heard. If you could just tell us a little bit about this, it just sent the atmosphere so very lively. I'm not a great singer, but this movie is one of the big hit films of mine, with a relationship with a sister and how I protect my sister. And her sister is actually a friend's daughter, my first sister. Okay. So nobody knew that, and they always think, the movie moves along as I am her brother. But finally come the climax, they come to know that she's not my real sister, but my friend's sister. Unko pala hai main, wanted to make her a collector, and so I was working towards that. So any harm comes to, I protect her. So this is a song in between where you have the comedies in films. So between the comedian and myself, a song where I'm dancing with the heroine. Namita was Miss Gujarat, and she's one of the top actors down south these days, and so very interesting film, yes. Okay, wonderful. And of course, like we said, you have a connection, you have a deep connection with All India Radio. Please tell us about that. Yes, it's both nostalgic. I was born here in New Delhi in 1954, and my father was working for All India Radio. The voice that was, I would say it in Tamil, Seidigal Vasipadu Ramanathan, the news by Ramanathan. So it was a very I would say my father's voice. Any father, parent of any son would feel the father's voice is the best. Absolutely. And we loved his voice, and everybody used to praise him for the way he brought out the news to the world. So that is a connection that I have with All India Radio, one of the deep connections. And of course, my father retired as Assistant Information Officer in Chennai when he was transferred from here in Press Information Bureau. So we have a strong connect with All India Radio, and the base is from here, and I was born here. Awesome. Yes. So did you get to spend your childhood days in the studios of All India Radio? Visited along with my dad once or twice, but not much because he was too strict and he was too busy with his work. And we studied here, of course. We were staying in Karol Bagh. And in MEA, I've actually come for the function, the centenary celebration. So it's a very deep connect, and I have my father's colleagues are no more, but still I remember Saroj Narayan Swami, Purnam Vishwanathan, Venkatraman, and all of them were great voices then.
It was the only medium of, knowing something in the country was All India Radio before Doordarshan. And coming back to your connection with All India Radio, your father, like you said, he was there. There is a connection between him and Gandhiji also. Yes, he was supposed to. That is what I thought. Maybe my memory is wrong. During the narration of the funeral, my father's voice also was there partly in that. And he was narrating a portion of the funeral procession. All right. Okay. And from very humble beginning of your career to where you are now. First, let's go back and talk about your childhood. What were your aspirations as a child? Aspirations, ऐसा कुछ नहीं था. I just, like any other kid. पिताजी ने बोला स्कूल जाना है, स्कूल गया. बोला कॉलेज जाना है, कॉलेज गया. किसके लिए जा रहे हैं तो मुझे भी नहीं पता था. So I was not even very serious about my studies initially, though I finished my degree in mathematics. So it is later on that we realized that, there is a purpose. You're going to shape your life and things like that. And so I was listening to that. But for me, the aspirations was to become an actor. Mm-hmm. So which my father was very much against. Oh. Yes, he was very much against. He said, that's not the place for you to be in. He wanted me to become a police officer. मैंने सोचा अच्छा तो फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएंगे. So पहला पिक्चर जो मैं किया वो पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर रोल ले लिया. वो भी पूरा हो गया. ख्वाहिश तो पूरा हो गया इनका. अच्छा शरद यू हैव टू बिकम पुलिस ऑफिसर बन गया. पिक्चर में बन गया. पहला पिक्चर में ही. Okay, so here we'll take a musical break and we are playing right now one of your very favorite numbers from Bollywood. चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा आवाज मैं न दूंगा चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे मुझे सब है पता सुनता है तू मन की सदा देख मुझे सब है पता सुनता है तू मन की सदा मितवा That was the Mohammed Rafi song. It is a matter of pride for All India Radio to host a program like Man Ki Baat, where we have our Honorable Prime Minister talking about. What are your thoughts on this? First of all, let me congratulate you on this program. I think a must for the country. Basically, cutting across party lines, cutting across politics. Common man thinks the Prime Minister or the Chief Minister of a state is unreachable. तो उनको तो जो सवाल direct पूछना है. So you have provided that channel, which is very, very interesting. A common man can talk to the Prime Minister of the country being a citizen. So that is one thing, and also the Honorable Prime Minister Modi ji, he said he's willing to do it. To answer a question of a common man openly on a channel or on the radio, you have to be well prepared for whatever question that he asks. It may be the simplest or even silliest questions. He is willing to open himself up, and I think Man Ki Baat jo the Prime Minister karte, it's very, very interesting, and I've listened to one or two of them. And of course, the command of the language that is there for Modi ji, I should appreciate. And I've also met him when he was the third time Chief Minister in Gujarat. मैं तो interview किया हूँ उनको. So
That's one thing which is once again nostalgic to me when I talk about Modi ji. Yeah. Okay, we have with us our colleague Nisha ji, and Nisha ji, I can see that you want to ask something. Yeah, I want to ask something, but first of all, I would like to tell our listeners कि जो एनर्जी आज हमारे स्टूडियोज में भर गई है शरद कुमार जी के आने से, जो एंथुजियाज्म है, मैं अपने आप को रोक बिल्कुल नहीं पाई. मैंने कहा सो माइक पे आना बनता है हमारा और बातचीत होनी जरूरी है सर से. सर, मैं अभी नोटिस कर रही थी कि आप एक गाना हमने जब प्ले किया, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, तो जिस तल्लीनता से आप उसमें गुम हो गए थे, जिस कंसंट्रेशन से आप उस गाने को सुन रहे थे, हु इज द आइडियल बिहाइंड दैट सॉन्ग? क्या मोटिवेशन है? मुझे मालूम नहीं है क्यों वो गाना गा रहा हूँ. जब भी मैं वो गाना गाता हूँ, माय वाइफ शी आस्क्स मी, शरद किसके लिए वो गाना गा रहे हो? जी, मतलब ये क्वेश्चन सदियों से आपका पीछा कर रहा है, एक तरीके से हम पूछे तो आपसे. और तमिल में भी ऐसा एक गाना है जो I start singing that wherever you are, you should be well and all that. बोल किसको बोल रही है सब? कभी भी ये गाना गाते हो, चाहूंगा मैं जो ते गा देते हो, और ये गिरनाल बाढ़ गए इन तमिल गाते हो क्यों? मुझे पता नहीं, तो अटक गया मेरे दिमाग में एक गाना गाने के लिए. So I like them for various lines maybe. So that's why I sing that song. Okay. तो कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है जिसको आज हम नहीं, अभी तक नहीं है. अभी तो मेरा उम्र तो 25 है, तो उसके बाद तो अभी तो मिल जाएंगे. That's interesting. And sir, coming back to your career, a career is like a You want me to sing चाहूंगा मैं तुझे? Oh yes, please. Yeah, sure sir. It's very my throat is not very good. I'll just sing few lines. चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा. चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे. Wow, beautiful. Beautiful voice and beautifully sang by शरद कुमार जी. क्या गाना गाया है, मतलब आपने माहौल ही बदल दिया है पूरे स्टूडियो का. और आपने कंसंट्रेशन देखा है? हाँ, बिल्कुल. कितना फोकस. Awesome sir, thank you, that was really appreciated. And like I was saying, coming back to your career, a career is like a ladder where you step on step one and then you move ahead. अब हिंदी में ही बात करो, मैं तो सुन लेता हूँ, कहीं कहीं मैं बात नहीं कर सकता तो इंग्लिश में आंसर दे देता हूँ, या क्यों हिंदी में ही बात करो. बिल्कुल. हाँ जी. तो आपका डेब्यू कैसा रहा? डेब्यू आफ्टर माय बीएससी मैथमेटिक्स जो खत्म किया मैंने, आई टोल्ड माय डैड, आई टोल्ड यू आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर, सो मना कर दिया उसने. सो यू कांट बिकम एन एक्टर, सो आई टुक अप अ जॉब. पहले जॉब था मुझे टू टेक केयर ऑफ अ न्यूज़पेपर इन बैंगलोर. सो चेन्नई से बैंगलोर निकल गया मैं. जब वहाँ था, आई थॉट इट वाज अ डेस्क जॉब. जब बोले तो वो न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन देखना पड़ेगा. सो मैंने सोचा अच्छा ग्रेजुएट हूँ, सर्कुलेशन देखना पड़ेगा, तो ऑफिस से रहेगा, टेबल रहेगा, चेयर रहेगा, सो काम कर लेंगे. जब मैं वहाँ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन तो साइकिल में जाके करना था. सो देन आई कंट्रोल अबाउट 7 साइकिल बॉयज. When a couple of people don't come to that area to supply newspaper, I used to go and deliver newspaper in shops. That was my very first job. So I did it with dignity. I always advise the youth of today to this program that take up anything that you get. You may be an engineering graduate, you may be somebody, you still may be waiting for a job. Don't wait for a job. Do what you feel is morally right. आपके लिए कर रहे हो, आपके घर के लिए कर रहे हो. Don't feel shy about it. It's your thing with dignity. Do anything that you get. Maybe you meet somebody there who will also pull you up to your career that you are going towards. Nice. So I took up the challenge, became a newspaper boy. Then मैंने फ़ोन किया ऑफिस को, सर मैं पढ़ा लिखा हूँ, सो इसीलिए थोड़ा रिपोर्ट कर सकता हूँ यहाँ से. बोले चलो जरूर करो. Then I started reporting from Bangalore. उसके बाद then I said I'll sell space for the paper that I was working for. Then I started selling space. So then थोड़ा पैसा आ गया हाथ में. So I started a television showroom in Bangalore. So I was dealing with two televisions at that time, the Solitaire and Bush were very famous televisions. I started that. Then Asiad came for reasons I don't want to mention here why I lost, because I was having black and white televisions. Indira Gandhi ji ने आके बोल दिए तो color television सस्ते में मिलेगा. So what I paid for was much higher than the cost of color television. So people went for color television. So बंद हो गया business. So I came to Chennai. Then started a travel agency. So after travel agency, that's where I met a director who was buying tickets from me. उसने बोला तो अच्छा दिख रहे हो आप हीरो बन सकते हो. तो मैंने बोला हीरो नहीं बनना है, मुझे पिक्चर बनाना है पहले. So the nuances of film industry, nuances of cinema, I should know first.
before I just jump into being an actor. So thoda paisa tha mera haath mein. So I put Mr. Karthik was a leading actor there then. I produced a film. Then I knew the nuances. Then I acted as a small character, police character, jo maine kiya. My father wanted me to become a police officer. I did that. So then later on, it was people like me. Maybe they like my face, like my smile, like the dimples on my face. I don't know what they liked, but they liked me. नेचुरली आपका जो ग्रेस है वो यहाँ पर हम कह ही रहे हैं, बार बार बता रहे हैं अपने लिसनर्स को, जो स्टूडियो है वो पूरा एनलाइटेंड हो गया है आज. क्यों हिमानी? और इस एनलाइटनमेंट को ना 2 लोगों तक ही सीमित नहीं रख पा रहे हैं. हमारे साथ ना सोनू भी आ गई हैं. सोनू भट्ट हमारी प्रेजेंटर हैं रेनबो पर, और वो भी आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं. अच्छा. वेरी गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. एंड वेरी वार्म वेलकम आपका कि आप आए, अपने समय निकाला यहाँ पर. एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में, जो मैं अभी आपको सुन रही थी. सबको तो क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है. हाँ, बताओ. सवाल, क्योंकि जब आप जैसे पर्सनालिटी सामने होती है तो बहुत उभर कर आते हैं, क्योंकि आपने एक लंबी यात्रा, एक लंबा सफर तय किया है, तो हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं. तो अभी आप जो बता रहे थे कि किस तरह से आपने स्टार्ट किया और किस तरह से थोड़ा पैसा जमा किया और उसके बाद अपना पैशन फॉलो किया. तो जब यूथ की बात होती है तो किस तरह से आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे कि अगर अपना पैशन फॉलो करना है तो क्या पहले इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, यानी कि पहले अपना खुद का पैसा थोड़ा जमा करें फिर अपने पैशन की तरफ जाएं, या फिर अपने पैशन को ही अपना करियर बनाते हुए भी इस तरह से आगे ले जा सकते हैं? पैसा कमाना तो बाद में आता है ना, पहले जो कुछ करना है तो निर्णय कर लेना जी. तो व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू बिकम, वो फिक्स हो जाना. वो तो जब व्हेन यू आर इन कॉलेज, इन स्कूल, व्हाटएवर यू आर डूइंग, educated, uneducated, whatever you want to do, just fix yourself to go towards that, and need not directly go there. You may not reach directly, but find ways to reach there. Okay. So मैंने तो मेहनत किया. I wanted to be in the movies, but I didn't know how to be there. But somebody came, that is called destiny. एक डायरेक्टर से मिलवा दिया मुझे. Then I said, no, I should know that. See, I should know filmmaking. Without knowing filmmaking, what's the point me acting in a film? I didn't go to any acting school. So जो central school IIT में पढ़ रहा था मैं, because my father was in INB ministry, so government में था, so IIT केंद्रीय विद्यालय में तो I got admission. So that is where I started doing plays in Hindi. So then from there on I had this thought of acting. So to go to your goal or the things that you want to achieve, the ambition that you have in your mind, find ways and means, but keep your thoughts very clear. Go towards that. Don't be deterred by all the failures that you face in life, because failure is a stepping stone to success. Exactly. Oh, wow. Yeah. That's a very positive message. Yes. Exactly. That's कहने का what you मतलब should ये do. कि रास्ते ढूंढिए, मेहनत कीजिए और अपने गोल्स को अचीव जरूर आ जाएगा. Right, right. Yeah, but it may be delayed, but it not be denied. Exactly. Great message. And time now to play another song, and that is again from one of your films. நீ முத்த தர சோறு பொங்கி தருவியா, வெயிலில் காத்திருக்கேண்டி, நீ வெள்ளரிக்கா பிஞ்சு ஒண்ணு தருவியா. தருவியா தரமாட்டியா, தரலன்னா உன் பேச்சு கா 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 கா. So इस गाने के बारे में अगर आप हमें बता सकें. ये गाना में नमिता जो हीरोइन थी उस पिक्चर में, the movie was called चाणक्य, and the director suddenly thought that I should come on a uniform, school uniform में आ जाना है. अरे मैंने बोला क्या school uniform में क्या गाना? He said, yeah, you wear short pants and Namita will have a skirt and you have a tie, you have a bag at the shoulder. I got even feel embarrassed. And that is a song where we both of us are school students. So the song that is which has been played is Tarviya Taramatiya, will you give, will you not give? That's what it means. So it is exchanging of love in a different format. My director has gone berserk in his imagination.
that suddenly we become school kids. Okay. And one thing which I want to comment here is that, you know, you're talking about your experience and all this and that glow on your face. So here I would like to point out You're that embarrassing when with my you... glow. No, there is... But this is natural. ये तो कुछ नहीं लगाया हूँ मैं. That is exactly what I'm coming to. That when So you this, came if into you want to this- have anything to talk about my glow, then I have to charge you a consultation fees तो आपको देना पड़ेगा. That's perfect. But हम सर यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछेंगे, क्या राज है? क्या राज है इस मेंटेनेंस का? कैसे आपने मतलब जो है अपने आप को इतना परफेक्ट, इतना बढ़िया तरीके से अपने मेंटेनेंस जो कहेंगे मेंटेन किया हुआ है अपने आप को? क्या सीक्रेट है सर? Basically, I think here also the youngsters should know that health is very important. दीवार होता है, दीवार अच्छा होता है तो पेंट कर सकते हैं उसके ऊपर, है ना? So like that, even life is like that. So once you maintain your, so basic health is very important in life. See, I'm very proud to say that I'm 65 years young. Wow. Okay, so I was born in 1954 in Delhi. यहीं पैदा हुआ मैंने. So my fathers instilled in us a lot of values. Values in the sense, जो कुछ बुरा होता है, तू भी एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखना, छोड़ दिया. पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया हमको, वो एक्सपीरियंस को आपको देते हैं, सुन लो. So that is one thing I learnt. Then in Tamil there is a proverb called "Alavukku meerinal amrutam visham." जब एक चीज ज्यादा हो जाता है, even if it is amrit, it can become poison. बिल्कुल. That's what he taught me. So that was only that he told me. Never told me don't smoke, don't drink. कुछ नहीं बोले थे. He said whatever you do it in your own money. And if at all you want to do it, don't do it in excess. And then exercising, because he was a sportsman. So I became a sportsman. Played football in school, in athletics in school. College में footballer बन गया. So every game I used to play. So health was very, very important to us because of my father. And health is one thing I've been always maintaining. And even if I don't drink a cup of coffee, 1 hour or half an hour of exercise is a must. And I eat before 7 o'clock in the night and I sleep. I'm a teetotaler, so I don't smoke. So that is one of the things. And the natural glow when I meet people, interact with people. So आज तो आप सबसे मिल गया, बहुत ज़्यादा ग्लो हो गया मुझे. आपसे पूछना चाहेंगे जो मिलेट ईयर हम मना रहे हैं इस वर्ष, तो मिलेट्स पर आपका क्या टेक है और लिसनर्स को क्या बताना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी जो लाइफस्टाइल में उसको कर सकते हैं इंक्लूड? Now organic food and different sort of dietitians are suggesting millets and things like that. It's all good. Basically we have to, तो पुराने ज़माने को जाना है ना. जब allopathy was not there, medicines were not there, how did they keep themselves fit? So किसान लोग जो काम करने के लिए जाते हैं, they are much healthier than people in the urban places. Why? Because they have got certain style. They are going and working hard, bending, getting up, walking, दौड़ते हैं, करते हैं नीचे. They are just doing everything themselves. So now, when urbanized, we don't have that. We are sitting in a place and working. So I think you have to move your legs. So do something, some exercise, some form of exercise, and eat well, eat healthy food. That is what all these healthy foods which are coming, which is good, but not everybody can keep on going at certain diet. तो मिलता ही नहीं, मिलेगा ही नहीं कहीं. So you have everything in limits. चावल खाते तो लिमिट में खाओ, चपाती का 20 नहीं खाना, 4 खाओ. हमारे साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टूडियो है भरता जा रहा है और आपके क्वेश्चंस जो अभी आप कह रहे थे कि पूछे जा रहे हैं वो रुकने वाले नहीं है, उनका सिलसिला जारी है और लगातार यूं ही बना रहेगा. इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ी हैं रेवती जी जो हमारी ऑफिशियल फोटोग्राफर है और वो भी एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहते हैं. வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். இன்னைக்கு டெல்லி வந்திருக்கீங்க, 100 இயர்ஸ் செலிப்ரேஷன், நீங்க படிச்ச ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க? I feel really nice. What जो पूछ रही है, 100 years of my school where I studied. So school which was started in 1923 in Simla, which shifted to Delhi when it was initially started Madras Educational Association. Now Delhi DTEA, Delhi Tamil Educational Association. So 100 years celebration, being a student who studied till 4th standard, me being invited as chief guest for that school, it's really nostalgic. Which is to my school where I studied, where the base of the foundation of education, that's where I'm going today at 2 o'clock. So इस समारोह में आप जो है शामिल भी होने वाले हैं, तो उसके कुछ इवेंट्स के हमें टिडबिट्स बता दीजिए कि क्या होने वाला है वहाँ पर. वहाँ पे चीफ गेस्ट हूँ, so मन की बात हो जाएगा वहाँ भी. Okay. So time now to take another break and we'll see you all on the other side of this break. जिया चले जा चले, जिया चले जा चले, नैनु तले धुआं चले. പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മഞ്ചണി വർണ്ണ ചുന്ദരി വാവേ
തങ്കുന്നക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ ഹോയ് പുഞ്ചിരി തഞ്ചി കൊഞ്ചിക്കോ മുന്തിരി മുത്തൊളി ചിന്തിക്കോ മൊഞ്ചണി വന്ന ചുന്ദരി വാവേ തങ്കുന്നക്ക തകതിമിയാടും തങ്കനിലാവേ जिया चले जा चले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना सकेरी जिया चले जा चले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना सकेरी जिया जले देखते हैं तन मेरा मन में चुभती है नजर देखते हैं तन मेरा मन में चुभती है नजर होठ सिल जाते उनके नर्म होठों से मगर गिनती रहती हूँ मैं अपनी करवटों के सिलसिले क्या करूँ कैसे कहूँ रात कब कैसे ढले जिया चले जा चले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना सकेरी जिया चले जा चले नैनो तले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना सकेरी जिया जले अंग अंग में जलती है दर्द की चिंगारियां मसले फूलों की महक में तितलियों की क्यारियां रात भर बेचारी मेहंदी पिसती है पैरों तले क्या करूं कैसे कहूं रात कब कैसे ढले जिया जले जा चले नैनो तले धुआं चले जिया जले जिया जले जिया ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सर वापस फिल्मों की तरफ आते हुए हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि एज अ प्रोड्यूसर आपकी सबसे चैलेंजिंग फिल्म या सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म क्या थी और क्या चैलेंज था उसमें? As a producer, I've done only a couple of films, not much. As an actor, of course. Initially, I produced 2 films. One with Karthik, and the second one also was Karthik. वो तो नेपाल में picturization किए थे. So producer has got a lot of challenges. It's not easy job. Producers goes to a lot of risks. पैसा तो इतना आसान से नहीं मिलता है. So banks don't finance producers. There's no proper channel for them. They have to go to private financing. So I think if that can be taken, and next time on the 100th episode, if we can ask मन की बात में तो प्राइम मिनिस्टर से पूछ लेता हूँ तो थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दे इंडस्ट्री को, फाइनेंसिंग सेक्टर में इंडस्ट्री को कैसा कर सकते हैं. सब कोलैटरल दे के बैठ जाते हैं, वो कोलैटरल चले जाता है, वो घर गिरवी रखे तो वो काम करते हैं, मैं गिरवी रख के प्रोड्यूस करते हैं तो पिक्चर फ्लॉप हो गया तो घर चले जाता है.
सो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उनको. So that's the only thing I have. And production is not easy, but anything, if you prepare well, I think before going into production, you should know the budgeting well, you should know the business well, and just पैसा आ गया तो production भी नहीं कर सकते, पैसा है तो सब लोग मूवी नहीं बना सकते. So I think everything should be planned, and then maybe you have the right people to work for you, and that's one thing. So production is not that easy. It's a risky business, of course. So acting is, of course, you have your talents and your luck. Luck तो होना है. लग तो होना है. Yeah, नसीब भी रहना है एक्टर बनने के लिए. There are so many actors who are sitting at home, much better actors than all of us that are there in the entire film industry. So I only tell them, wait, you will get your chance. पहले तो मैं आपका जवाब बहुत ध्यान से सुन रही थी कि आपने कहा कि लक बहुत जरूरी है, काम भी आना चाहिए, एक्टिंग आना चाहिए, हुनर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ किस्मत का होना जरूरी है. तो जब यंगस्टर्स की हम बात करते हैं, खासतौर पर जो इस फील्ड में आके अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हम कई बार देखते हैं कई तो बहुत स्ट्रगल करते हैं पर वो अपॉर्चुनिटी उन्हें नहीं मिल पाती. कई होते हैं जो स्ट्रगल नहीं करना चाहते और ओवरनाइट स्टार्स बनना चाहते हैं. ऐसे यंगस्टर्स को आप क्या कहना चाहेंगे जो वो इस नहीं, फील्ड कुछ में आना नहीं हो चाहते हैं? सकता है, कुछ नहीं हो सकता. कुछ वो स्ट्रेट नहीं, अवे कुछ नहीं हो सकता. अगर वो ओनली struggle सर्टेन नहीं करें. पीपल आर लकी. वो नहीं जो सोचा है किसी को उनके नसीब में लिखा हुआ है. सो दे क्या है, वो नहीं तो सब लोग नहीं बन सकते, वो नहीं तो कोई बन जाते हैं. जी. Will that sustain? I don't know. But मेहनत करके जो आते हैं ना, they be having a longer innings and जो कम overnight आ जाते हैं. So you should work. Efforts never fail. Concentrate करो. So पैसा नहीं है तो मैं क्या बोलता हूँ, टेबल पोंछ दो, रेस्टोरेंट में काम करो. क्या चलता है आपको, किससे लेना देना है? Today youngsters I think they feel ashamed to go and work somewhere. You don't have to answer anybody. You are doing something legal. चलो करो वो काम. मैं तो अभी after in a month I'm going to go work in a restaurant, and I've told all my friends and my fans, go there, clean the table, clean the plates, take orders. Let the others follow this. Till you reach your goal, do something. Don't sit at home. क्या बात है. तो इस सस्टेन की आपने बात की कि आपको उस काम को सस्टेन करना पड़ेगा, कंटिन्यू करना पड़ेगा. तो इसके लिए जो जो चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे हम उनसे पार Challenges होते ही रहेगा ना. Exactly. So life is a challenge. You have to accept it. तो कुछ टिप्स यंगस्टर्स को अगर आप देना चाहेंगे कैसे निकले Willpower, hard work. Keep your mind and body should be well tuned to yourself. Then when you find at some point of time you're going to fail, there'll be some law of providence, है ना? मेहनत करो. The God will be looking at you that you're doing some hard work. Something will come, somebody will come, lift you up in life. ब्यूटीफुल सर. और मेहनत की जैसे आपने बात की, आपने तो बहुत मेहनत की है. हाँ जी. और आपकी अगर फिल्मों की बात करते हैं, आपके अगर रोल्स की बात करते हैं, तो आपने हीरो का भी काम किया है और आपने विलन का भी काम किया है. तो कौन सा ज्यादा एंजॉय किया आपने? जो मैं पहले पिक्चर में आया तो मैं विलन का काम तो किया, तो 36 फिल्म में विलन ही था. सो उसके बाद हीरो बन गया. सो लाइफ में सब तो हीरो बनने चाहते हैं ना. सो मैं भी वही था. सो आई वांटेड टू बिकम अ हीरो, बट the path that was there was I started my career as a villain and then I moved on to become a hero. So acting as a villain is more difficult than acting as a hero. But एक ही ये बात है उसमें, villain is very clear in what he wants. Hero doesn't know what he wants. क्योंकि villain एक girl को देखता है, so he has to go get her. Hero तो गाना गाता है, love letter भेजता है, फूलों भेजता है. 12th reel he says I love you. Before that villain has already said I love you. Wonderful. तो अब आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, संगम का. ओके, तो रफी साहब की आवाज में ये गीत. मेहरबान लिखूं हसीना लिखूं या दिलरुबा लिखूं, हैरान हूँ कि आपको इस खत में क्या लिखूं. ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो
कि तुम मेरी बंदगी हो. People will be fed up with my voice. Play Rafi साहब का गाना था. आज ना होना कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो. तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है. तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है. तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग है. तुझे इतना ही कहता हूँ कि मुझको तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है. ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो. What a beautiful song. सर आप ये बताइए, इतनी अच्छी पसंद है आपके गानों की ना, प्रोड्यूसर का माइंड लगता है वहाँ पर, एक्टर का माइंड लगता है, सिंगर का माइंड लगता है, किस पर्सनालिटी को नहीं, हम जोड़ेंगे basically आपकी song Sangam, selection Sangam, से? the thing I liked about Sangam was entire the movie itself. You know, it has so much of emotions in that. You know, जी जी. the triangular love between Raj Kapoor ji, Rajendra Kumar, and Vaijayanti Mala, the most beautiful one I've seen. And this is very, very interesting how one finally gives up his life for his friend. सर ये जो ट्रायंगुलर लव की जो बात होती है, कभी हुआ है क्या लाइफ में? ये जो प्रेम नहीं, पत्र की ट्रायंगुलर बात लव होती नहीं है। हुआ, मगर लव तो हुआ है. अच्छा अच्छा, हाँ, लव हुआ है। स्कूल से हुआ है. अच्छा, हाँ, वहाँ ही शुरू हो गया. और ठीक है। स्कूल में कभी किसी को प्रेम पत्र लिखा? हाँ, लिखा हूँ ना. अच्छा, बताइए. क्या लिखा था सर? उसका कंटेंट जानना चाहती हूँ मैं. जी नहीं, क्या लिखा था वो तो 8th क्लास में क्या लिख सकते हैं. माई फर्स्ट एवर लव वाज इन सेंट्रल स्कूल IIT में जब पढ़ रहा था चेन्नई में. देयर वर लॉट ऑफ जर्मन्स इन IIT कैंपस. सो आई लाइक द साइकिल व्हिच वन गर्ल वाज राइडिंग. सो हर नेम वाज Sylvia Bizans. So she was my very first crush, I would say. So the main crush was because I wanted to take the cycle and ride it and see, because it was a German cycle. जी जी. इतना सेल्फिश था मैं. तो तब से काउंट करें और अब तक नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड्स. We'll have another session in the same studio about girlfriends and friendship and what is true friendship. So I'm really proud to say that people that I meet, today's generation, today's youth, itna crime chal raha hai yahan. See, that is because of the bringing up and the way they think about women. See, as far as I was concerned, my parents and the society that I came and grew up, the respect for women was utmost. Whoever I met in my life are still my friends. May it be girlfriends and whatever it is. They have been in my life. Even after the marriage, they are my friends. So that is what this relationship is all about. That is respect of women. So that is how my love life has been. Many people know I've been, falling in and out of love. But that's not designed by me. ऊपर वाला तो डिजाइन कर दिया, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए. That is beauty of the relationship कि आप उसे किस तरह से आगे होल्ड करते हैं. हाँ, she should be happy, right? Exactly. हाँ. तो यहाँ बात हुई पेरेंट्स की, सोसाइटीज की, आपके फ्रेंड्स की, तो फैमिली के बारे में बताइए कुछ अपनी जो भी खास, जो लोग घर में रहते हैं और कुछ खास बातें, कुछ ऐसी अनछुई बातें जो अभी तक पहुंची नहीं है. Anyway, you want to ascertain to the people that I'm 68 years old, so you should know my children. Yeah, there are 3 daughters and 1 son. Okay. First daughter is Varalakshmi का पिक्चर में काम कर रही है. She did her MBA from Edinburgh University. And the second daughter, Rayan, she did her master's in Leeds in sports management. And then my third daughter, Pooja, she also finished her MBA from Edinburgh University. And my son, Rahul Sharat, is studying in finance and banking in Singapore now. So there are 4 kids of mine, and then I have, of course, grandchildren I have, Tarak and Radhya. And my son-in-law is Abhimanyu Mithun, who has played cricket for India and now he plays for Karnataka. He resigned and is also playing the world circuit in cricket. So this is my family, and all my 3 girls are intelligent, naughty, and bullying their father is the main thing for them. And the son, of course, has become taller than me. Now I have to get scared of him. He's 6'3" and
tough-looking guy. He doesn't want to be in films. He wants to become a footballer. So that is it. Of course, my wife Radhika, and of course my ex-wife Chaya. Of course, through her I had Varalakshmi and Pooja. So though it has all happened in our life, we are all a single family. So I think the way Radhika has adjusted to my previous family, I'm really proud even today on this that I would like to say that to her, because she has kept the family bondage together, even though there's some mishap in my life. And that we are taken as, sportingly, we are able to be friends. There's one more thing I like to pass on messages too. This is something which is very nice in our family, that we all go on holidays together. So all this is very interesting, and so I'm proud of my children, and they'll find the way, and they're all hardworking. Varalakshmi is very hardworking. She's become very wanted actor in Telugu film industry. She's done some fantastic films there. And Pooja works for our company. She works for my wife Radhika as executive producer for all the movies that we make. And Rahul is studying still, and he's the one I have to watch out for, because he's too tall and too handsome, so I should warn him now itself. तो हम कह सकते हैं कि आप एक प्राउड फादर हैं। जब Yes, आप बता I am. रहे हैं तो आपके चेहरे पे वो दिख रहा है, आंखों में वो चमक आ रही है ना। बिल्कुल ग्लो Yeah. जो हो रहा है, मैं कह रही हूँ बार बार कि आज जो हमारा स्टूडियो है कैसे जगमगा रहा है, क्यों सोनू? बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि आपने फैमिली के बारे में बताया, फ्रेंड्स के बारे में बताया, अपने करियर के बारे में बताया, अब आगे अब और क्या प्लानिंग्स हैं, इनके बारे में बताइए हमारे सभी सुनने वालों को। कोई ऐसा काम जो आपने किया हो जो आपको अभी भी याद है, आपको लगता है कि मेरी मेमोरीज में है, जो मेरा बेस्ट काम है, या फिर कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि अभी आपने करना बाकी है? टुवर्ड्स सोसाइटी में भी? Yeah, society, of course. Exactly. I've been in Society, politics. for I'm nation. still in politics. So politics तो बहुत बदल गया है, and people have to be very aware of whom they want to rule. And I think the people have to get more responsible towards the basic leaders that you choose. So I don't want to talk much about politics here, but still, I think it's in the people's hand. They should select good leaders who they feel will govern. And I think the only thing I would like to say here is politics without money is the one that country needs now. A common citizen should be able to stand in elections and win. So I'm working towards that. पैसा के बारे में कोई नहीं सोचना है. If you want to do service to the people, go stand in election and see. So that may change a lot of systems and a lot of things that you want to change. A common man wants to change something, go for it. And politics is not dirty, as many people term it to be. जी बिल्कुल। You're doing some service to the humanity. See, when you कमाते हैं जो पैसा है, if you're earning 10,000 rupees, maybe you'll be afford to give 1,000 rupees to somebody and help them out. But जब politics हो जाता है, जब governance में आ जाते हो, जब administration में आ जाते हो, then you can plan along with the government to make programs to help the people that you wanted to help. So I think everybody, the youngsters of today, I think in school education itself, I feel in 14-year-olds itself should start political science and should start studying politics. जी, तो जैसा कि अभी आपने पॉलिटिक्स की बात की, और देश को, लोगों को अवेयरनेस तो हो ही रही है दिन प्रतिदिन, सब अपने जो अधिकारों के बारे में उनको एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जागरूक भी हैं। देश को जो है हमारे अध्यक्षता मिली है G20 की, तो इस पर आपका क्या टेक है? It's very interesting, though it was our turn to, India has definitely grown. I would definitely proudly say, and people will say that I know Sharath is trying to be biased on certain opinions, but I'm not biased. But what is happening today, the image of a country has entirely changed after Modi ji has taken over. जी जी। And not because I knew him during my interview, and even now when 2 or 3 occasions where Modi ji has seen me, said Sarathkumar ji, Vanakkam, he'll say. So I'm really happy that such a big, huge personality like him still remembers the day I came and met him, and remembers me as a person, remembers that I'm also in politics, though I'm not with them. So I feel G20 is something, it's a proud moment for India. See, whatever it is, though many people may say it's come as a turn. अरे यार टर्न तो आता है, मगर to come here and if they feel we are really worth to be, lead the G20, and which is very crucial part in the entire world. There's something like global warming, economic setback in UK, USA, everywhere. A lot of people are facing economic setbacks, and I think we have to lead. It's time for us to lead the world. And I think we've got a lot of intelligent people, intellectuals in our country who can be used to make our country proud and make our country big. And those people who have gone, I would say reverse migration. Those people who have gone abroad, let them come back to our country, make this country proud, make this country grow. बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं मधुलिका जी, जो जानना चाहती हैं एक छोटा सा सवाल। सर, ये बात जानना चाहूंगी कि आजकल जो भी बातें हम लोग कर रहे हैं उसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो सोशल मीडिया को आप किस तरीके से देखते हैं? इज इट गुड फॉर यूथ और फॉर एवरीवन? इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है सोसाइटी पर। See, social media is one thing which should be used. Anything that you have should be used well.
See, it is just certain things, the comments that are coming for every, post that anybody, the celebrity or VIP that posts any comment. Some comments are very vulgar in the nature. Vulgar is not in the language part of it, but it is hurting them personally. See, it's a forum where you don't even see the person you're talking about. You just say it just for the sake of saying and attract attention. See, that should not be. You are proactive. You want to do something really nice. You want to criticize somebody, have reasons to criticize. You have your own opinions. That opinion need not be with me. You may like arm. I may not like arm. You might like banana. I may not like banana. That doesn't mean you can put a comment or you're a stupid fellow. You cannot say that. No, that is your opinion. It's a democratic country. But I think people who have very bad and hitting below the belt kind of a comments, I think the government should cognizance of this and see to that they are punished in future. I don't think this is a good trend. And creating some viral content. Recently there was a content that one of our colleagues in the industry died. See what will happen to very close friends of them, the relatives of them. They really get shocked. And there is a view of more than 2 lakhs for that. So I think these sorts should be taken into thing, and there are plus and minus in both. Use it positively. Anything that you have, it has got a value. Use that value for the right purpose. That's all. और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था कि excess of everything is bad. Yes. कि अगर आप सोशल मीडिया को भी उस तरीके से यूज वही करें, है. Yes, because you are saying you are somewhere hiding and talking. You are not in front of me and talking. जी, तो क्या करें, आपकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि हमारे स्टूडियो में भीड़ बढ़ती जा रही है. अभी हमारे साथ हैं शीला रामचंद्रन जी. और नल्ला இருக்கேன். जी. और वो जानना चाहेंगे. I'm so happy I'm meeting so many people in this studio. நல்லா இருக்கேன். இத்தனை வருஷம் ஆயிட்டும் நீங்க அப்படியே தான் இருக்கீங்க. Thank you. ரகசியம் என்ன சார்? ரகசியம் வந்து you have to give me a consultation. I have to charge you if I tell you why you look young. पूछ रहे हैं यंग कैसे हो? मैंने बोला एक बिल भेजूंगा, उसके बाद एडवाइस दूंगा. डेफिनेटली. बहुत सी बातें हो गई, पॉलिटिक्स की बात हो गई, सोसाइटी की बात हो गई है, सोशल मीडिया से रिलेटेड मैसेजेस सर ने दे दिए कि किस तरह से उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए विद द पर्पस. अब सर आपकी पसंद का गाना इंतजार कर रहा है. आराधना ब्यूटीफुल सॉन्ग. आप भी साथ साथ मैं आराधना गाना तो मुझे आता है. नहीं आप मेरे सपनों की. Really, Rajesh Khanna was the heartthrob of lot of fans across the globe, and especially Aradhana actually broke into the Tamil market. People started watching Hindi movies from Aradhana. It ran almost a year in Anand Theatre, if I remember, in Chennai, Mount Road. I think Rajesh Khanna's 17th consecutive hit was Aradhana. 15 पहले सुपरस्टार बन गया ना. सुपरस्टार, राइट. मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू. Every song is like that. चाहूंगा मैं तुझे, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, तेरे सपनों की रानी कब आएगी. तो राधिका is listening to it somewhere, finished for me today. सब के किसी के बारे में तो गाना गा रहे हो. आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू. चलिया आ तू चलिया. प्यार की गलियां, बाहों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं. प्यार की गलियां, बाहों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही हैं. गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू. आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू. चलिया तू चलिया. सी खिल के पास आ
दिल के दूर से मिल के चैन आए, फूल सी खिल के पास आ दिल के दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू। तो हम तो आ ही गए और सर आप भी यहाँ हैं। ब्यूटीफुल ट्रैक अभी और आपकी पसंदीदा फिल्म है और बहुत सारी बातें आपसे भी, आपने बहुत कुछ बताया, हमें बहुत कुछ समझाया और जो कि हमें पता है कि हमें आगे अपने लाइफ में ना बहुत काम आने वाली है। छोटी जो टिप्स भी आपने दिए ना कि कैसे स्ट्रगल करना है, कैसे मेहनत करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे अपने पैशन को फॉलो करना है, अपने गोल्स तक पहुंचना है। अब इतनी सारी बातें आपसे हुई, आप हमको इतने देर से देख रहे हैं, अब आपसे ही जानना चाहते हैं कि अब क्या आप जो फिल्म कास्ट करते हैं तो उनमें हम लोगों के लायक कोई रोल हो जाएंगे? जरूर देंगे आप हमको, हम आएंगे आपसे अप्रोच करेंगे जब। See, anybody can act. It is just what you have in your mind. What you जब जो बात कर रहे हैं मुझसे, so this is the same thing in front of the camera. So the acting is something what you are from inside. राइट, जो तो ये सिचुएशन समझ गए तो बस एक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हिमानी हमारा तो हो गया है, हम रोल पक्का हो गया, हम पहुंचने वाले हैं, हम आपसे मिलने के लिए जल्दी। आपने ऑन एयर आपका ऑफिशियल फोटोग्राफर को बता देता हूँ, पूरा ले लेता हूँ, बायोडाटा पूरा रख लेता हूँ। देश विदेश सुन रहा है आपके कमिटमेंट का, जरूर दे दे, कमिटमेंट इज द कमिटमेंट, जब कमिटमेंट दे दे जरूर दूंगा चांस। बिल्कुल आप फिल्म में, अब हम आपके इसको फिल्म में मिलेंगे। जरूर हाँ जरूर। इसी के साथ सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप एक वीकली जो मैगजीन है तमिल में, उसके भी फाउंडर एंड एडिटर हैं। नहीं, तमिल में नहीं था, मीडिया वॉइस तो इंग्लिश में ही था। इंग्लिश में ही था, ओके। इसके साथ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि प्रिंट मीडिया है, टीवी है, वेब सीरीज है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, मतलब जो पहुंचने का माध्यम है ना लिसनर्स तक, व्यूअर्स तक, वो बदल रहा है दिन प्रतिदिन। तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल क्या है यूथ के लिए, और क्या सशक्त माध्यम है जिससे कि हम उनको मतलब पहुंच सकते हैं, उनके दिल का हाल जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं? See, the Madhyam is now the most powerful weapon they have in, all this thing like you're talking about, print media, visual media, ये सब तो है, मगर social media has taken over the entire country by surprise, the world itself. So, but use it well. See, गलत news तो कभी भी नहीं देना. So, you're hurting somebody somewhere. So, I think be true to yourself and give the right messages across to the thing, and every platform is very important these days, and every platform should come with good content. That's what it is. तो छोटा सा एक मैसेज जो आप देना चाहें हमारे लिसनर्स को? Yes, I would say that the blood that flows in everybody's body is red in color, so we are all one. So that is equality. So I always like to end my wherever I go. So let us create a society in the future, breaking all barriers of caste, creed, religion and language. What a beautiful message. और इस गाने के साथ हम विदा लेना चाहेंगे। मैं हिमानी और सोनू हट, मैं यानी निशा भारद्वाज लेते हैं आपसे इजाजत। नमस्कार। Thank you so much. Thank you. नमस्कार। நூறு என் செஞ்சுரிய பாரு, இந்த தலைமகன் தான் உங்களோட முதல் ரசிகன் பாரு. 666 இங்க 6 கோடி பேரு, இந்த 6 கோடி தமிழனுக்கும் சொந்தக்காரன் பாரு. எனக்கு வழி சொன்ன தமிழ் மண்ண மறக்கல, உங்க அன்புலதான் ஒரு போதும் குறையல. சொல்லுறத செய்யுவேன், செய்யறத சொல்லுவேன், சொல்லுறத செய்யுவேன், செய்யறத சொல்லுவேன். எப்போதுமே உங்கள் நெஞ்சில் நிரந்தரமா தங்குவேன். நூறு என் செஞ்சுரிய பாரு, இந்த தலைமகன் தான் உங்களோட முதல் ரசிகன் பாரு. 666 இங்க 6 கோடி பேரு, இந்த 6 கோடி தமிழனுக்கும் சொந்தக்காரன் பாரு. கொடி கட்டி உச்சத்தில் நிற்பவன், நெஞ்சில் எப்போதும் நம்பிக்கை வச்சவன்.
வெற்றி கொடி கட்டி உச்சத்தில் நிற்பவன், நெஞ்சில் எப்போதும் நம்பிக்கை வச்சவன், மனசில் இருக்கிற நெருப்பு அணையல, மனச மறக்கிற ஆள் இல்ல, சொந்த காலில நிக்கும் போதுல கிடைக்கும் இன்பம் போல் வேறில்ல. ஆளுக்கு ஒரு காலம் அது அவசரமா ஓடும், நீ தூங்கும் போதும் ஒத்த கண்ணை திறந்திருக்க வேணும். ஆளுக்கு ஒரு காலம் அது அவசரமா ஓடும், நீ தூங்கும் போதும் ஒத்த கண்ணை திறந்திருக்க வேண்டாம். மனசு வச்சாலே சாதிச்சு காட்டுவேன், தமிழ வச்சுக்கு போவால சுட்டுவேன். மனசு வச்சாலே சாதிச்சு காட்டுவேன், தமிழ வச்சுக்கு பூமால சுட்டுவேன். நினைச்சா முடிக்கிற நினைப்பு இருக்கணும், அதுக்கு நெஞ்சில துணிச்சல் பிறக்கணும். கிடைச்ச வாழ்க்கையில் தினமும் ஜெயிக்கணும், படைச்ச சாமிய என்றும் வாழ்த்தணும். மூணு பக்கம் நீரு அதில் மூழ்கி நீயும் பாரு, நிச்சயமா வாழ்க்கையில வெற்றி பல நூறு. மூணு பக்கம் நீரு அதில் மூழ்கி நீயும் பாரு, நிச்சயமா வாழ்க்கையில வெற்றி பல நூறு. மாமா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணு. ஏரோப்ளேன் பறக்குது வர் மேல, அதையும் தாண்டி மின்னல் போற கீழே. நான் போற அவளுக்கு தான் மாலை, மச்சான் தில்லு இருந்தா வச்சு பாரு கால கால கால. டண்டனக்கா 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 சரக்கு, கடிச்சுக்கடா 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 முறுக்கு. கொழுந்து பெத்தல போட்டாவாய் செவக்கு, மச்சானையும் மச்சினி நானும் தொட்டாருள் பறக்கு. ஏறி ஏறி ஏறினே போ மாமே. நூறு 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 என் சிறிய பாரு, இந்த தலைமகன் தான் உங்களோட முதலசிங்க பாரு. 6 6 6 இங்க 6 கோடி பேரு, இந்த 6 கோடி தமிழனுக்கும் சொந்தக்காரன் பாரு.